Hello students. So in today's class I am going to share a very interesting problem on rotational dynamics. The question is, we have a table like this, support is there and a light hook is there, and on this hook a cylinder is mounted. The cylinder can rotate about this axis which coincides with the hook. This cylinder has a rope wrapped on it, and the rope is passing over a pulley and a mass is hanging at the other end. This mass is suppose M1 and the mass of the cylinder is M2. There is no friction between the stand and the table, so this is smooth, and there is no slipping between the rope and the cylinder. Pulley is light and massless, frictionless. String is light and inextensible. So the question is, find the velocity of mass M1 when it has fallen through H. This is our question. Now how to handle this problem? If you want to try it of your own, pause the video and try it. Okay, so now let's go for the solution. So what happens is कि जब हम इस सिस्टम को रिलीज़ करेंगे तो ये जो माउंट है ये आगे की ओर बढ़ना शुरू करेगा. अगर थोड़ी देर के लिए हम मान लें कि हमने सिलेंडर को रोटेट करने से रोक दिया है, देयर इज सम arrangement over there by which we can make this cylinder not to rotate at all. तो जितना ये स्टैंड आगे बढ़ेगा उतना ही ये मास नीचे जाएगा. बट एक्चुअली क्या हो रहा है? एक्चुअली सिलेंडर रोटेट भी कर रहा है और रोटेशन की वजह से उसके ऊपर से जो रस्सी है वो खुलती जा रही है. तो खुलती हुई रस्सी के कारण भी ये मास नीचे की ओर जाएगा. तो वन बाय वन अगर हम सोचें कि हमने माउंट को पकड़ लिया, सिलेंडर को घूमने दिया, तो जितना रस्सी अनरैप होगी उतना ही ये नीचे आएगा. और अगर हम सिलेंडर को रोक दें तो जितना ये स्टैंड आगे की ओर जाएगा उतना ही ये मास M1 नीचे जाएगा. अब अगर दोनों काम एक साथ हो रहे हैं तो सिलेंडर जितना नीचे जाएगा वो इन दोनों चीज़ों का सम होना चाहिए. सो इफ़ आई इमेजिन दैट दिस मास मूव्स डाउन बाई अ डिस्टेंस सपोज y and this stand moves forward by a distance x and this cylinder rotates by an angle theta, and let me imagine that the radius of this cylinder is r. तो हम यहाँ लिख सकते हैं y is equal to the distance moved by the stand which is x plus the rope which is unfolding or unwrapping from the cylinder. So because the cylinder has moved through an angle theta, so it should be r theta. आपने ये फॉर्मूला पढ़ा होगा, एंगल इज इक्वल टू आर्क ओवर रेडियस. सो द एंगल बाय विच सिलेंडर हैज मूव्ड इज थीटा, और आर्क का मतलब है कि सिलेंडर कितना घूम गया है, कितनी रस्सी अनरैप हुई है. जितना इस आर्क पर होगी वो अनरैप हो जाएगी सिलेंडर के घूमने से. तो आर्क की जो लेंथ आएगी वो आर थीटा आ जाएगी, विच इज हेयर. So this is the increment in length because of the unwrapping of the rope, and this is the distance covered by the mass M1 in the downward direction. Mass moved by the stand towards the pulley. अब
ये हमारी बेसिक इक्वेशन हो गई इस प्रोसेस में। अब अगर हम इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं तो y का डिफरेंशिएशन हो जाएगा dy बाई डी टी विच इज़ वेलोसिटी ऑफ मास 1, x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा dx बाई डी टी विच इज़ द लीनियर वेलोसिटी ऑफ द स्टैंड, लेट मी कॉल इट एज v2, and r is constant, so r theta d theta by dt, that is the angular velocity of the cylinder. और अगर हम इसको दोबारा से डिफरेंशिएट कर देते हैं तो ये बन जाएगा a1 इक्वल्स टू a2 प्लस r alpha. So we have got these three beautiful relations just by observing the system. अब अगर मैं इस रस्सी पर गौर करूं तो बिकॉज दिस रोप इज लाइट एंड इनएक्सटेंसिबल, so each point on the rope will have same speed, same acceleration. तो अगर ये मास नीचे की ओर जा रहा है विद एन एक्सेलरेशन a1, तो इस रोप का वो कांटेक्ट पॉइंट जो कि यहाँ पर सिलेंडर के साथ है वो भी आगे की ओर जाएगा विद एन एक्सेलरेशन a1. So what is this a2 representing? This a2 is actually the linear acceleration of the stand, which is same as the acceleration of center of mass of the cylinder. तो जो सिलेंडर की एक्सेस है वो कितनी लीनियर वेलोसिटी से आगे जा रही है वो बता रहा है. क्लियर? ओके. सो अब अगर हम यहां पर फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं तो m1 मास को अगर मैं गौर से देखता हूं तो इस पर नीचे की ओर फोर्स लगेगा m1, ऊपर की तरफ टेंशन लगेगी T, और ये नीचे ही जा रहा है विद सर्टेन एक्सेलरेशन a1. तो इसकी इक्वेशन हो जाएगी m1g माइनस T इज इक्वल टू m1a1. सिमिलरली ये जो रोप है इसमें टेंशन है T, क्योंकि यहाँ भी टेंशन T है, तो ये ही टेंशन इस स्टैंड को आगे की ओर खींच रही है. तो T इक्वल टू m2a2, एंड इफ आई ऐड दीज टू तो मेरे पास आ जाएगा m1g इक्वल्स टू m1a1 प्लस m2a2. दिस इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन फॉर मी. मेरा पर्पज़ है कि मैं a1 कैलकुलेट कर लूँ, सो सम हाउ आई हैव टू गेट रिड ऑफ दिस a2 टर्म. तो a2 टर्म को गायब करने के लिए आई कैन यूटिलाइज दिस इक्वेशन. सो आई कैन राइट m1g इज इक्वल टू m1a1 प्लस m2 इंटू, इन प्लेस ऑफ a2 आई कैन राइट a1 माइनस r alpha. So now this alpha term is to be removed from the equation. So we will be getting our answer a1. Once a1 is calculated, our task is done because it is going down. Initially its velocity was 0. Acceleration is known to us. So after falling through a distance y or h, we can find the velocity provided a1 is known. So alpha is the angular acceleration of the cylinder. And the cylinder is moving in the rotational sense because the rope is having a tension which is trying to rotate this cylinder about this axis. So if I ask what is the torque, so you can say torque is equals to I alpha, and torque is because of the tension into radius is equals to I alpha. Okay, so torque into r square is equal to I alpha r. That means tension into r square upon I is equals to alpha r. And as far as tension is concerned, we have already written by free body diagram that T is equals to m2a2.
So we will substitute that m2 a2 r square upon I. For cylinder, moment of inertia is half m2 r square is equals to alpha r. So m2 cancels out, r square cancels out. So we can write 2a2 is equals to alpha r. Previously we have proved that a1 is equals to a2 plus alpha r. That means a1 is equals to a2 plus 2a2, and that means 3a2 equals to a1, which means a2 can simply be written as a1 by 3. So once this is known, our task is done. क्योंकि फ्री बॉडी डायग्राम में हमने ये कैलकुलेट कर लिया था कि m1g इक्वल्स टू m1a1 प्लस m2a2. So this is m1a1 plus m2 into a1 by 3. That means a1 taken out common, 3m1 plus m2 by 3 equals to m1g, which means a1 is equal to 3m1g upon 3m1 plus m2. This is the acceleration with which mass m1 will start accelerating downwards. Now if we wish to find the velocity, v1 square is equals to u1 square plus 2a1s. So v1 square is equal to 0 square plus 2 into 3m1g over 3m1 plus m2 into h. So our velocity will be under root of 6m1gh over 3m1 plus m2. As a special case, if we imagine that both the masses, means the hanging mass and the mass of cylinder are equal, so v1 will be equal to square root of 6mgh upon 4m. M cancels out, and that means under root 3gh over 2. So this is the velocity with which the mass will be moving, provided it is allowed to fall through a distance h. And that's the answer. So if the masses are unequal, this is the result. As a special case, this is the result. So revise the problem once again. It is hitting many concepts simultaneously, and especially for those students who are targeting JEE, this type of problems are a good sort of revising the concept and applying them. Hope you like it. Thanks for watching.